4:30. So very good evening to all of you and welcome to this workshop on entrepreneurship skill, attitude and behavior development. This workshop is being conducted under the aegis of IMT CDL's Innovation Cell, an initiative under the Ministry of HRD, Government of India. Many of you would be aware of the fact that the informal sector of the country supports about 80% of the population. And if we take into account the micro, small, and medium enterprises, they provided around 11 crore jobs in the country. So this is as per the National Sample Survey data. And from this segment of MSMEs, the micro enterprises, they contributed around 97% of the total jobs. So also if we look at the number of MSMEs in the country, there are 63 crores of MSMEs in the country, that is micro, small and medium enterprises. And the contribution of the micro enterprises is around 99%. This highlights the significance of the micro, small, and medium enterprises to the development of the Indian economy, and so also highlights the fact that employment can be generated through undertaking certain ventures, and this would be possible if we have a creation of critical skills to undertake a new venture, or if you are already into a venture, you are running your own startup and you want to build or scale up your startup. So what are the skills that are important to scale up the startup or to initiate a new venture? As you must have observed, that this workshop would be conducted in a learning mode. So the first half of the session, that is till around 5 p.m., we will be discussing about the core or the critical entrepreneurship skills that are required. तो पहले के 30 मिनट हम थोड़ा सा समझेंगे एक्सपर्ट से कि ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कौन से हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी वेंचर को, किसी भी स्टार्टअप को या तो इनिशिएट करने के लिए या ग्रो करने के लिए. आखिरी के 30 मिनट हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे. तो आपके साथ एक रियल लाइफ सिचुएशन शेयर करी जाएगी और आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना उस पर विचार दें कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते. तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सिंस दिस इज अ हैंड्स ऑन लर्निंग, सो प्लीज कीप योर राइटिंग पैड्स रेडी with you and your pen ready with you. Similarly, if we take into account your queries, we cannot do so initially, say in the first 30 minutes. अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी आप प्रश्न करना चाहते हैं, तो आप चैट मोड पे अपना प्रश्न जरूर लिखिएगा, जिससे कि हम उसको जब लास्ट हाफ, सेकेंड हाफ में हम डिस्कस करेंगे, तो आप सबकी जो भी क्वेरीज हैं, उनको हम जरूर एड्रेस करेंगे. So the last 15 minutes would be solely devoted to your queries. Now let me introduce our expert today. So today we have Dr. Shweta Singh, the CEO and founder of Ennoble IP, a global professional services provider. Dr. Shweta has been acknowledged as the most inspiring women leaders 2022 by the Economic Times. She runs Women Innovation and Entrepreneurship Foundation, a non-profit organization. This is an incubation cum accelerator center dedicated towards building and protecting, mentoring, and funding the entrepreneurs in the country. Dr. Shweta is a rich amalgamation of corporate and educational experience. She has about 9 years of corporate experience in the area of intellectual property, research management, and business consultancy. She has authored a number of books published in national and international journals, and she has been delivering many training programs to strengthen the
entrepreneurial and startups ecosystem. Dr. Shweta is a mentor, angel investor, wealth manager, and guide to a number of tech-based startups and small and medium enterprises. I would now request Dr. Shweta to highlight on the critical entrepreneurship skills that are required to build a venture or to create a venture. So over to you, Dr. Shweta. Thank you so much, Bharti. Am I audible? Yes. Thank you so much, Bhati, for such a wonderful introduction. And thank you for making me speaker today for this session, as this is my passion to talk to uh, aspiring entrepreneurs or people who want to start their journey. When we talk about entrepreneurship, the first question which arises always that where to start, how to start, and what problem should we solve. So first of all, I'll deal with the problem which actually the we as a mentor or we as entrepreneurs or we as advisors face, right? The first problem which we are facing today, that हम सिर्फ ऑन्टरप्रेन्योर बनने के लिए, मतलब बहुत फैसिनेटिंग है लिंक्डइन पे या कहीं पे आपके नाम, हमारे नाम के सामने फाउंडर और सीईओ जुड़ जाना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है व्हाई यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर जस्ट फॉर दैट फैसिनेशन सेक दैट फाउंडर और सीईओ ऑफ दिस कंपनी, और सेकंड जस्ट फॉर रेजिंग द फंड, क्योंकि इतना तेजी से 2016 के बाद फंड्स मिलने लगे हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट होने लगा है, वीसी राउंड्स होने लगा है, बड़े बड़े वेल्थ इंडस्ट्रीज, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज जो है स्टार्टेड टू फंड द स्टार्टअप्स, एंड सबसे बड़ी बात है देन वी हैव मोस्ट ऑफ द यूनिकॉर्न्स इज कमिंग फ्रॉम इंडिया नाउ. सो हमें सिर्फ इसलिए स्टार्ट करना है बिजनेस बिकॉज वी टू बिकम एन फाउंडर एंड सीईओ एंड रेज द फंड, नंबर ऑफ फंड्स, बिकॉज व्हेन आई मीट many of the aspiring students I would say, और बिल्कुल यंग चैप जो अभी जॉब ही शुरू किया है, so उनका रहता है मैम बिजनेस तो स्टार्ट करेंगे, फंड कैसे मैनेज करेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स फंड. क्यों बिजनेस स्टार्ट करना है? क्योंकि हमें भी पेटीएम की तरह जो है 1000 करोड़ की कंपनी बननी है, हमारा भी वैल्यूएशन 1000 करोड़ होना चाहिए, मिलियंस बिलियंस में, मतलब वी टॉक नंबर्स, राइट? वी डोंट टॉक what exactly the problem we are going to solve. So first of all, this myth has to be has to be broken कि startup करना बहुत easy है. So और ये myth तब break होगा. It's not important. See, we are taking this session, this workshop session to become entrepreneur. But I always say that everyone don't need to become an entrepreneur. We need to become enterprising actually, because जहां आप हैं, जहां काम कर रहे हैं, it's not important that आप सिर्फ और सिर्फ एक नया business करके problem solve कर सकते हैं, but आप जहां हो, you can start solving the problem through your organization, through your company also, and that word is actually you can become an intrapreneur. If not entrepreneur, you can become an intrapreneur. So that's why entrepreneur skills and entrepreneur development, how you are developing your skills, is very important. And that's why I say that before becoming an entrepreneur, become an enterprising person, because you will be enterprising means you have all the quality of an entrepreneur, either you starting a business or not, right? So the first question, why you want to be an entrepreneur. The second question, which I always say, is ask what I want to be and why I want to be, or if I want to be entrepreneur, who is my role model. क्योंकि हम सब किसी ना किसी को see, we always look forward to someone, right? I look forwarded to Kiran Bedi. I cannot be IPS, but I look forward to Kiran Bedi because of her courage, her inspiration, the way she has delivered her life, like right on her track. So I don't want it to be IPS, but I looked at her because I wanted to have the characteristic like her. So bold, confident, फॉरवर्ड लुकिंग पॉजिटिव पर्सन. सो आप किसको देखते हो, राइट? आज के टाइम पे इफ आई सी, आई फॉलो मेनी ऑफ द सेलिब्रिटीज हु हैव बिकम एन एंटरप्रेन्योर, राइट? सो आई सी द फॉरवर्ड लुकिंग वुमेन, आई सी फॉरवर्ड लुकिंग मेन. सो किसकी तरह बनना है? देन नेक्स्ट विल बी what I want to, why I am going to be an entrepreneur, as I told you. So there is two things according to me. One, only for the wealth creation, where one, making a legacy, leaving a legacy behind me, and maybe the both. So
to become an entrepreneur, to become an enterprising person, you need to identify the problem which is going to solve majority of that problem belongs to the majority of people, that they are suffering from. Like for example, if I give why Oyo is successful, there are many stories. I'm not going in those stories that ओयो के आज ये न्यूज आ रहा है वो न्यूज आ रहा है, बट अगर आप देखोगे तो ओयो एक सक्सेसफुल, एंड फॉर मी it is one of the best example of startups, because he is the only founder, Ritesh, you all know, is the only founder who worked toward gaining the equity back. हम अपनी इक्विटी डाइल्यूट करते हैं विद द वैल्यूएशन, दिस इज ऑल डिफरेंट गेम, बट वैल्यूएशन ज्यादा होता है, ज्यादा फंड लेते हैं, और एट लास्ट अगर आप देखोगे तो फाउंडर के पास 4 5 6 7 मतलब विद इन 10 उनके पास उनकी इक्विटी रहती है, बट ही वॉज द ओनली फाउंडर जिसने खुद पैसा कमाया और वो पैसा लगाया, खरीदा अपनी इक्विटी, अपने शेयर्स वापस खरीदे, बिकॉज ही न्यू दैट ही हैड बिल्ड इट फ्रॉम स्क्रैच. सो he solved the actual problem. People are suffering, people were not. अगर आपको याद होगा तो ओयो ने सबसे पहले बहुत बड़ा मार्केट केटर नहीं किया, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व किया, जो हॉस्पिटैलिटी की प्रॉब्लम होती है, सफाई हाइजीन की प्रॉब्लम होती है. जब हम कोई भी होटल में या छोटे होटल में या बजट होटल जिसको हम बोलेंगे, बजट होटल में जाते थे, हाइजीन की प्रॉब्लम होती थी कि हमें कभी सैनिटरी के चीजें एक साथ नहीं मिल रही है, टॉयलेटरीज जिनको बोलते हैं एक साथ नहीं मिल रही है, और बजट में होटल नहीं मिल रहा है, हमें ढूंढना पड़ता था बहुत जगह, कोई एक एग्रीगेटर नहीं था उस वक्त. सो ओयो केम, और जब उन्होंने स्टार्ट किया तो जब आप किसी होटल में एंटर करते थे तो जो चाहे वो छोटा लॉज हो या जहां भी ओयो ने अपना लिया, सो दे ऑलवेज हैंड ओवर द ओयो किट, राइट, एंड दैट किट इज ऑल योर रिक्वायरमेंट. आपको जो 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी आप वहां रह रहे हो, वो रिक्वायरमेंट उन्होंने सॉल्व की पहला. सो दे मूव्ड स्टेप बाय स्टेप, राइट. सो दैट मीन्स दे आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम वाज वन प्लेटफॉर्म which can become the aggregator of the hotel. Hospitality की problem थी, aggregator of hotel, and I as a person, because they and the best thing, they didn't started with an application. उनका कोई ऐप नहीं आया पहले, राइट. उनका एक नॉर्मल वेबसाइट था, उसको कहते हैं कि उन्होंने अपना एक रन करके देखा, बिजनेस मॉडल को रन करके देखा. सो उनका खुद का प्लेटफॉर्म नहीं था पहले, उन्होंने टेस्ट किया लोग कैसे इसको ले रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि मुझे आज कहीं जाना है, किसी सिटी जाना है, और मैं बस ओयो पे जाऊंगी, देखूंगी ये होटल्स है, मेरे बजट में ये होटल आ रहा है, उसकी रेटिंग है, उसका रिव्यूज है, मैं पढ़ूंगी, मैं जाऊंगी, और मुझे पता है ओयो इज गोइंग टू प्रोवाइड द बेस्ट हॉस्पिटैलिटी देयर, बिकॉज आई स्टार्टेड ट्रस्टिंग ओयो, राइट. देन धीरे धीरे वो जो है अपने ऐप डेवलपमेंट में आया, और आज ओयो का ऐप है जिससे आप बुक करते हो. सेम वे ग्रोफर ने किया, सेम वे नाउ ब्लिंकिट इज देयर फॉर दैट, सेम वे आपका जो है ऑनलाइन मिंत्रा शॉपिंग, राइट, शॉपिंग एप्स आया, ई कॉमर्स आया, right. So what they did, they identified a problem. Why? Because I sitting here, I as an entrepreneur, you as many of us as a job employees, right, we are doing somewhere job, and हमें हफ्ते में 1 या 2 दिन मिलता है weekend to spend the time with either yourself or with your family, और उसमें भी आपको groceries लेने जाना है, आपको shopping करने जाना है. So this problem has been solved by these online applications, because they are serving your all need. Sitting at one place, you can order and you can spend that time. So they are saving your time, they are saving your to an extent money, they are saving your precious time which you can give to your loved one or your family, right. So the main core agenda, how to start a business or how to be a good entrepreneur, is how good are you in identifying a problem. And then if you, and why I'm saying not, I'm not focusing on solution, because the best way you identify the problem, you will have plenty of solutions, because then you will start working on plenty of solution कि अगर ये problem है तो इसका ये solution हो सकता है, ये solution हो सकता है, ये solution होता है, हो सकता है. So that way you will be I would say brainstorm that these many solutions are there and which can best fit in the market, right. So when I always say that my first agenda, when I talk to people who intend to become, I say what problem you are solving,
how big is that problem or how small is that problem, but will it going to scale up, right? People should love. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ बनाया और वो जरूरत नहीं है उस वक्त मार्केट में, right? So main skill set is how good you are in identifying the problem, then your creativity, that how good you are in creating the solution of that problem, right? It is not important that I am if I take my example, I am a person who was not very good in wet lab research, though I have did my masters in biotechnology, but I'm not very good at uh, working in laboratory, but I understand the technology, and not even biotech, I understand the technology from damn computer science also, electronics also, wireless. And right now we are having 5G team and we are working on so many patents. So it's like attitude, your creative and your technical attitude should be very strong. That is very important. Rest, you get the handhold of so many people. Second is your third is your risk taking ability, how good you are in taking risk. Now here I'll give you one example, very simple. I uh, i and people like me, when we talk as an angel investors or as people who put money in another's business, right? We get, ma'am, आइडिया ये है, सब कुछ बना लिया है, हमें फंड कर दो, राइट? द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच मनी यू विल बी पुटिंग, क्योंकि अगर आप देखिए, सिंपल, वेरी सिंपल, सिंपल, दैट इफ वी आर गोइंग टू स्पेंड 100 rupees also, we will think how much worth is this 100 rupees, right? Now you are asking investors money in your account, in your business for your dreams. Why he will or she will put the money? So the first is how much you are going to take risk, how much you have done for your business, so that, because if you are ready to take risk as an investor or as a VC, they know that if you are a risk taker, you will find out the way. But risk taking is not as shown कि मुझे risk लेना है तो मैं आज jump कर जाऊंगा कुएं में, या मैं jump कर जाऊंगा समुद्र में. तैरना आता है या नहीं आता है, right? So risk taking is one thing which is very important, but mitigating that risk, that means calculating that risk, is very important. I am a huge risk taker. Initially I failed a lot. Why? The reason was I had a bad partnership break. I had lost crores of rupees because of my that nature, that jump karo, रास्ता बना लेंगे. That is very good attitude, I'm telling you. But जंप करो, रास्ता बना लेंगे, बट वो रास्ता कैसे बनाएंगे वो दिमाग में पहले ही सोचना. वी नीड टू mitigate, we need to plan that risk, and which is very important. This is my personal experience, that's why I'm sharing that. Yes, जंप करूंगी, रास्ता बना लूंगी, बट क्या क्या रास्ता होगा जंप करने से पहले, वो मुझे सोचना, वो हमें सोचना बहुत जरूरी है. सो कैलकुलेटिंग द रिस्क and then jumping, taking the risk is very important. Then comes persistence, and उसको आप बहुत तरीके से देख सकते हो. Never give up attitude, I say that whatever happens, don't give up. And this is especially, I don't know how many females are there on this workshop, but this is very important for women entrepreneurs or women who are working. Giving up is very easy thing, which anyone can do, right? But as an entrepreneur, you bring complete world into you, you bring complete skill sets into you, you bring the complete organization into you. So giving up can never be a solution. So now you're, इसके पहले जो हमने risk taking की बात की, उसको आप यहाँ पे correlate भी कर सकते हो. If you are a risk taker, you will never give, because you will calculate the risk, mitigate the risk, and you will always find a way to solve that particular situation, particular problem. So continuously determination के साथ चलना, किसी भी solution को, किसी भी problem को ना बहुत नए तरीके से different solution हो सकता है, simple solution से solve कर सकते हो. So as an entrepreneur, you need to be persistent, you need to be willing to keep your hard work even the time is very tough. And that is why, see, many people will not tell do not know Paytm's founder very closely, but I, through my friends, know him very closely, and I know that what kind of problems he has faced. 197 से कंपनी उन्होंने स्टार्ट की, जिसका ब्रांड है आज Paytm, and Paytm everyone knows, right?
solved. It is one of the company who made the digital payment so easy, right? Or demonetization makes the Paytm so strong, and it was luck for the Paytm ki demonetization aaya and everything went digital. So finances money went to digital, right? But उनके साथ बहुत सारे startups, उनके साथ MobiKwik भी था, उनके साथ कुणाल शाह का भी एक startup था, just free charge. तो there were many startups which came line, but Paytm, और वो सबके लिए टाइम सेम था, डिमोनेटाइजेशन वाज इक्वल फॉर एवरीवन, पेटीएम के लिए भी, मोबीक्विक के लिए भी, फ्री चार्ज के लिए भी, देयर वर मेनी डिजिटल स्टार्टअप, payment solution startups, I would say. But why? Because he was persistent, he gone through it. Matlab, he was never a show off person. He believed in himself, didn't give up after so many, I would say, seeing the problem, facing the problem, बहुत सारा problem face करने के बाद didn't give up और determination के साथ लगे रहे कि मुझे ये solve करना है, and then bringing innovation into it. So that was the attitude, and why that's why a founder, entrepreneur has to be very determined. एक मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं तो अगर आपके अंदर never give up वाला quality है और आप determined हो, so no one can stop you from being a king. Because you know why? आज के टाइम पे सेलिब्रिटी बनना, जब हमने स्टार्ट किया और आज का टाइम जो है, दैट इज टोटली डिफरेंट. सो जब हम स्टार्ट किए तब बहुत मुश्किल था, बट आज एक्सपोजर है, रिसोर्सेज हैं. आज के टाइम में मिलेनियर बनना और आज के टाइम में सेलिब्रिटी बनना दोनों बहुत इजी है, because of Instagram, because of Facebook, because of Chingari app, because of TikTok. So it's very easy for people to become celebrity. Now you see influencers का ज़्यादा value है than the Bollywood or Hollywood celebrities these days. And same way I say that this is the best time if you want to be millionaire or billionaire. This is the best time to start, because people are trusting. वो market में पैसा है और वो पैसा लगाने के लिए भी investors ready हैं, but they see the skill set. एंड बेसिकली आपके प्रॉब्लम, आपके सोल्यूशन सबको छोड़ के इन्वेस्टर सबसे पहले देखता है इंसान कैसे हो आप, मींस द क्वालिटी यू हैव, द स्किल्स यू हैव, द हाउ, व्हाट काइंड ऑफ person you are. That is very important. Next come is adaptability for an entrepreneur is very important, because see, maybe your product is liked by someone, the consumer, maybe the product is not liked by consumer, right? But how to grow that, how to differentiate that product, आप उसको different कैसे कर सकते हो, change कैसे कर सकते हो, वो बहुत important है. तो उसके लिए आप कितने adaptable हो situation में, वो this is something which is required. आप कहीं पे see, as an entrepreneur it seems that she is an entrepreneur or he is an entrepreneur, he's or she is a boss on their own, so her situation may the situation goes according to them. No, you have to be according to the situation. आपको कहाँ पे क्या करना है. जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ऑफिस में प्यून रखने के भी पैसे नहीं थे, और everything was self-funded that time. And till now, I very proudly say that we are profitable, and till now there is no investor fund, because I love my equity, I love my shares. So I have to adapt that situation कि मैं उस वक्त प्यून भी बनी अपने ऑफिस की और फाउंडर भी बनी. So I say that जो फाउंडर होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, he or she is P2P, प्यून to proprietor, which is very important characteristic which an entrepreneur can have. Then comes your leadership. See, I believe a positive leader, and this is my personal experience, I have seen the companies growing and seen the companies falling also because of leadership skill. People say that those who speaks good become the leader. No, those who act good, those who have power to transform the situation are the good leaders. And I believe in my personal leader since childhood, whom I have always praised, is Ratan Tata. I believe because a leader should have a strategic focused mind with empathy. Empathy is a main factor. This can be my personal choice. I'm not saying कि सब लोग ऐसा सोचते होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर एक सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. जब वो सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, दैट मीन्स ही और शी इज गोइंग टू मेक मनी बाय इम्पैक्टिंग द सोसाइटी. पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करके सोसाइटी का वो पैसा बनाएगा. बट
the main characteristic according to me in a good leader should be empathy, how good you are toward the people, how good you are, because everyone is human, everyone is devoting their time. And secondly, I cannot be an entrepreneur without my team. Just writing that I am founder and CEO of something is wouldn't make me a good leader or good entrepreneur until unless my team is there to support me. आज मैं बहुत proudly बोल रही हूँ जो कि मैं profitable हूँ और I'm very proudly holding my all shares just because of my team, right? So my team is attached to me because I think I have that qualities to hold my team together, right? It's not only coming on a mic, coming on a podium and delivering inspiring and motivating thought, but no, it's how I go back and handhold my team, how I go and react to my people, not to only my team then. As a leader, how I react to my clients also. As a leader, how to I react to outside people. और मैं हमें ये मानती हूँ कि आपका जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक से कभी डिफरेंट नहीं होता है. आप दो पर्सनैलिटी कभी हो ही नहीं सकते. एंड दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन अ गुड लीडरशिप. बिकॉज मैं ऐसा बोलूँ कि मैं बाहर बहुत अच्छी हूँ एज अ प्रोफेशनल, डॉक्टर श्वेता इज टोटली डिफरेंट, एंड अ पर्सनल मैं घर पे आके कैसे बिहेव कर रही हूँ इज अ टोटली डिफरेंट. नो, आई कैन नॉट, बिकॉज दैट इज समथिंग इनबिल्ट, दैट वैल्यू that cannot be taught, but it always, I say, it comes with experience, right? मैं शायद इतना अच्छा बोल भी नहीं पाती थी एक टाइम पे जितना आज बोलती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर फियर था, फियर ऑफ स्टेज. और ये हमेशा आज भी मैं आई गो ऑन स्टेज, सो 95% जाते टाइम टिल द माइक इज इन हैंड मेरे हार्ट बीट्स बहुत फास्ट रहते हैं. सो बट and that comes in personal life also and professional life also, दोनों टाइम. और मैं अगर आप देखोगे ना, कोई भी पर्सन डुअल पर्सनालिटी नहीं हो सकता. द वे ही इज बिहेविंग एट वर्क प्लेस इज बिहेविंग एट होम, एंड द वे ही इज बिहेविंग इन द पर्सनल लाइफ इज बिहेविंग इन द professional life. So the leadership is not at one place, but all through you. It's your personality and how you build how you make the decisions for your people, for your clients, for your people surrounding your network. And this is very important because आपके पास पैसा आ जाएगा, फंडिंग आ जाएगा, आप बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट एक अच्छा लीडरशिप, अगर एक अच्छे लीडर नहीं हो तो टीम कोलैप्स होने में टाइम नहीं लगेगा. देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ आपको बताऊंगी. फाइनेंशियल मैनेजमेंट कम्स विद अ वेरी ह्यूज टर्म एंड पीपल थिंक दैट ओ माय गॉड दिस इज समथिंग बिग वी हैव टू मैनेज. सिंपल बताती हूँ. एज अ स्टार्टअप जो आपको करना है, आपको कैश फ्लो पे बहुत ध्यान देना है. बिकॉज वाई, सी, यू नीड टू प्लान योर बजट. रेवेन्यू फोरकास्टिंग जिसको कहते हैं, रेवेन्यू प्लानिंग जिसको कहते हैं अपने बिजनेस का. जितना ज्यादा कैश कम बर्न करोगे उतना आप सेविंग जिसको कहते हैं ना, सेविंग करके रखो. And I'll give you example. We were in Mumbai. We held my company held a session, a pitch deck, a pitch session held, and we had good angel investors, investor network. I think 15-17 angel investors were sitting, and were having 35 pitches that day. All 35 pitches, believe me, all 35 pitches. When we went into the revenue model, उन्होंने रेवेन्यू में सैलरी ही लिख रखा था. सीईओ के, हमारे फाउंडर और सीईओ की सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ, हमारे इनकी सैलरी 4 लाख रुपए पर. व्हाई द इन्वेस्टर विल गिव योर सैलरी टू यू? Why he will, or why as an investor people will burn their cash on your salary? You should earn your salary. So this is like, don't put the, as a startup initial में नहीं, please get the work, please get the target, the market, आप customer grab करो, traction build करो, then whatever salary you want to take home. But starting में cash burn कम करो. And there are example of startups I'll give you later जब हमारा second phase चालू होगा, कि उन्होंने सिर्फ कैश बर्न के कारण अपना स्टार्टअप को आगे नहीं ले जा पाए. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको आउटकम पे ज्यादा ध्यान देना है कि पैसा ज्यादा, रेवेन्यू ज्यादा लाओ और खर्च कम करो. पर उसका ये भी मतलब नहीं है कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट्स को खुद की सैलरी में, आप बिलीव नहीं करोगे, 2013 सितंबर आई लेफ्ट माय जॉब एंड स्टार्टेड माय करियर. And that was my last salary withdrawn. 2013 September. I started taking salary back in 2019 August, when my CA said कि मैम अब आपको सैलरी लेनी चाहिए. उसके पहले सिर्फ मैं उतना ही एक्सपेंस लेती थी जितने में मैं मेरा एक्सपेंस चला सकती थी.
सो दिस इज समथिंग कि आपको रेवेन्यू पे ज्यादा टारगेट करना है, कैसे पैसा लाओ, कैसे पैसा खर्च करो, उस पे आपको फोकस करके उसको कम खर्च करना है. नाउ कम्स टू योर टाइम मैनेजमेंट. सी, टाइम इज एवरीथिंग. Time is money, and that's the fact. Why I'm giving my personal example, because that is the best way, because I failed in because due to unbalancing of my emotional and business quotient, and I lost it around 2 years almost. I burnt crores of cash, which actually I earned from my client only, or lost the time. बट उस पर क्रिब नहीं करती ज्यादा, बिकॉज आई थिंक दैट मैंने वो करोड़ जो है लगा दिए लाइव सीखने में, राइट. तो मैं कहती हूँ मैंने इमोशनल और बिजनेस इंटेलिजेंस को बैलेंस करने में करोड़ ऑफ रुपीज लगा दिए. बट वो जो टाइम गया मुझे उसका हमेशा पछतावा रहता है, क्योंकि उस टाइम को मैं बहुत डेडिकेटली बिजनेस को बहुत, आज मैं जहां हूँ शायद उसके 10 टाइम्स वहां होती, अगर वो 2 साल मैंने बर्बाद नहीं किया होता. So time management is very important, and it will reflect it. It should reflect in your business plan, in your revenue model, everywhere, that how well you are managing time. Right? It's very easy to come home, start Netflix or Disney Hotstar, and start working. It cannot. It don't happen like that. I am not saying that don't watch. I also watch, but how you are managing that then. For every entrepreneur who want to be entrepreneur, don't, because this time management teaches us to balance between work and life. There are very less people, in fact I till date fight with this, right. I fight with myself how to manage this. दो मैं आज आपको बता रही हूँ, बट मैं भी बहुत टाइम पे मैनेज करने में फेल हो जाती हूँ. वर्क अपना प्रोफेशनल और पर्सनल, बीइंग अ मदर एंड ऑल्सो, मैं भी वो फेल हो जाती हूँ. बट मेरा, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डू, आई वुड नॉट से दैट आप भी नहीं. वी नीड टू मैनेज आवर, बिकॉज ये जो टाइम जाता है ना, जब पीछे आप देखोगे, सो इट अरे personally what I have gained. So the time management is not only for your business but for your personal life also. That जब आप 5 साल बाद पीछे देखो ना, जब आपने start किया और आज, so how well you have managed. It's not very difficult, but it's a bit difficult, because every time when you try to manage, and this is the फैक्ट, ये बिल्कुल मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब भी आप पर्सनल टाइम देने को सोचोगे नहीं इसको थोड़ा सा बिजनेस में लगा दो तो वहां और रेवेन्यू आ जाएगा. बट रेवेन्यू के पीछे अपना पर्सनल लाइफ नहीं खराब करना चाहिए, पर्सनल टाइम नहीं खराब करना चाहिए. Then comes the very and most interesting part of entrepreneurial skill, and my favorite is networking. See, uh, people like me, those who are here, who comes from a very humble background, a small town, do not have. I'm a 80 born kid, right? So all the 80s or half 90s born kid knows that Google का access नहीं था, exposure कम था, हमें पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है. But I would say whatever I am today is because of my network. As a woman, as an entrepreneur, I don't say that only women, but as an entrepreneur, we need to build, as I told you, कि आपका personal space भी important है, we need to build a trusted network around self. So दो तरह के network होंगे, एक आपका business network होगा, दूसरा आपका trusted network होगा. Now you need to build both the relations, both the networks very strongly. Why? बिकॉज आपका जो पर्सनल ट्रस्टेड नेटवर्क होगा वो आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करेंगे. व्हेन आई एम आउट माय एंड इन माय, फॉर एग्जांपल, in my personal in my trusted network, my dad is there, my mom is there, my husband is there, my son is there, my friends are there, my personal executive is there, my core team members are there, who works day and night to build the business with me. But when I come to my business network, I never hesitate. Now, how to build the business network is never hesitate. I went in all kind of conferences, I went in all kind of seminars, all kind of workshops. जो भी networking event होते थे, मैं initially सब में जाती थी और वहां लोगों से बात करती थी. Why? Because as an entrepreneur, I should not never hesitate to ask for help, or ask say my problems, ask for help, that how you can, I am facing this problem, how you can help, or sir or ma'am, I have started a business, give it a try to my services, right? So धीरे 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 आप वो अपना बिजनेस नेटवर्क भी डेवलप करोगे. ये बिजनेस नेटवर्क आपके कस्टमर के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, वेंडर्स के साथ, एंड फाइनली बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज इनसे ही खुल के आते हैं. सो नेटवर्किंग, and it is said, right, network is your net worth, and it is very true. All my business revenue today,
बिलीव नहीं करोगे यार, लेकिन मेरे पास कोई बहुत बड़ी सेल्स की टीम नहीं है। अभी 2 साल पहले से हम 8-9 लोग हुए सेल्स में, अदरवाइज इट वाज मी एंड वन ऑफ माय फ्रेंड, नो वन एल्स वाज देयर इन द सेल्स टीम, और जो भी हमने किया अकेले किया। आज 2-2.5 साल से, आई थिंक 2019, नॉट 2-2.5 साल बट 2019 से वी हैव 8 मेंबर्स का टीम नाउ। तो उस वक्त भी 3 या 4 लोग होंगे 2019 में। सो वी हैव 3-4 पीपल दैट टाइम, और आज 8-9 लोग हैं। सो ये जो सारा बिजनेस आया ना, ये सारा का सारा नेटवर्किंग से आया, बिकॉज आई टॉक टू पीपल, आई कन्विंस देम, आई मेक दैट रिलेशनशिप, आई मीट देम, आई ग्रीट देम, so that way I have made this network, and people who make network make a good net worth also. That is very important. So this was all entrepreneurship skill. Now we will talk about the business man with a real examples, that what skills actually required with all this. So one I have taken with the case studies here, that business management skills are very important, and I have given the example of Amazon founder here, Jeff Bezos. So if you see how well managed, because what is Amazon, right? What is Flipkart? What is Myntra? So these companies are aggregator of the e-commerce platform. They are aggregators of all the fashion brands, all your daily accessories, need of daily requirement, right? Now, if they will not do the well supply chain management and well data management, right? They cannot win. Now this person was very good at managing the business, I would say. And the best part was that Amazon was totally dependent on its supply chain management, and Jeff Bezos has instrumental in developing the highly efficient technology which can actually manage in the best way the supply chain. Now why, how you should relate, आपका बिजनेस क्या है, कैसे रिलेट करोगे, आपका बिजनेस क्या है, उसमें सबसे ज्यादा पेन पॉइंट किस एरिया में हो सकता है जहां पे आप आके फेल हो सकते हो। सो आपको वो पॉइंट नोट करना है। इनके में इनका सप्लाई चेन था, अगर वो स्ट्रांगली नहीं चल रहा है सो वहां पे ये फेल हो सकते हैं। दैट मीन्स इनके पास इतना होना चाहिए कि हर वक्त कंज्यूमर का नीड पूरा कर सके, राइट? हर वक्त, इफ यू डोंट, many of you won't believe that Amazon has filed plenty of patents, numbers of patents just on warehouse management, on different drones, on different technology to manage the warehouse, which is part of the supply chain, right? So they know that their supply chain should be strong. They instrumentally managed the process of good supply chain by bringing efficient people and efficient technology. Then the second part was their data management approach. And if you see, and data management approach is best for Facebook and Google also, if you see. For example, मुझे पता नहीं आपने ये नोटिस किया है या कभी नहीं, अगर आप फोन पे भी किसी से कोई सामान की बात कर रहे हो या किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, आई एम नॉट आस्किंग कि आपने गूगल पे सर्च किया या आपने फेसबुक पे क्लिक किया, आप बात भी कर रहे हो तो आपको वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी ना किसी सर्च में दिख जाएगा। एंड आई हैव नोटिस्ड इट फ्यू टाइम। दैट मीन्स कहीं ना कहीं गूगल, मैं बोलती हूँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं बोलती हूँ गूगल आपको सुन रहा है या एलेक्सा आपको सुन रही है। सो दैट वे इफ यू हैव नोटिस, एवर नोटिस, एंड दिस इज, ये जो पूरा आपका ऐप बिजनेस है, वो चाहे फेसबुक हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे गूगल हो आपका, दिस इज ऑल डेटा ड्रिवन. And that's why I'll recommend go and watch the quote hearing of Mark Zuckerberg, Facebook. Go and watch that complete episode, how he answered and how much, what was all questions and how he handled. And same way, go and watch for Sundar Pichai of Google also. You will know what is the importance of the data. Now, the second entrepreneurial skill is teamwork. See, I already mentioned there in my previous अभी थोड़ी देर पहले भी कि टीम के बिना आप कुछ नहीं हो. A good team can lead you to become a billionaire. A bad team can actually get the business stopped also. And teamwork depends how good leader you are. And the case study is of Netflix here. See, Reed Hastings. अगर आपने नोटिस किया होगा तो अभी जो नेटफ्लिक्स का डैशबोर्ड है ना,
और अभी थोड़े दिन पहले अगर आप 1-1.5 साल पहले का नेटफ्लिक्स का डैशबोर्ड देखोगे, टोटली डिफरेंट। आपको बिलीव नहीं होगा, जो प्रेजेंट डैशबोर्ड है, मोस्ट ट्रेंडिंग दिस, मोस्ट ट्रेंडिंग इन इंडिया, मोस्ट ट्रेंडिंग हॉरर्स, मोस्ट ट्रेंडिंग shows of America, this dashboard was actually experimented by interns of those company. उनको फ्री हैंड दिया था गया था कि तुम्हें जैसे लगता है, जो तुम्हें लगता है करो, जिससे कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट हो, कंज्यूमर ज्यादा अट्रैक्ट हो। और उन्होंने वो डैशबोर्ड रन किया एंड इट एक्चुअली मेड डिफरेंस बिकॉज नाउ पीपल नो विच इज द नंबर 1 शो in India, which is the number 1 show worldwide, which is the number 1 US show, which are the top 5 horror movies, which are the top 5 romantic movies, which are the top 5 shows. So now it has become very easy. And he always believed that the culture which you create, when I say he, it's Reed, the CEO of Netflix, the culture you create in the company will lead. And I would say that he has created a deck called Netflix Culture Deck. It is 127 slide presentation. If it is available, please go and study that. That will actually help to create the culture of your organization, how to build a good team, how to keep your team engaged, how to keep your team on foot and working. Many of you must be doing management, right? मैंने भी MBA किया है, but I always believe that MBA किताबों से नहीं होता है। मतलब फिलिप कॉटलर के 4 P's और 5 C's से मैं मैनेजमेंट नहीं सीख पाई, जितना मैनेजमेंट मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करके या नौकरी करके सीखी, राइट? जितना मैनेजमेंट मैंने नेटवर्क करके सीखा, लोगों से बात करके सीखा। नाउ उसमें हम जब मैनेजमेंट किताब पढ़ते हैं, उसमें मुझे एक वर्ड हमेशा याद रह गया जब मैं अपनी टीम बिल्ड कर रही थी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO। एंड आई पूरे मैनेजमेंट 2 साल की पढ़ाई मैंने की भी नहीं, 2 साल की वैसे पढ़ाई, मैं 1 साल बाद मेरी जॉब लग गई थी एंड आई वाज डिबार्ड, सो एग्जाम भी लेट देती थी। बट वो पूरा 1 साल जो मैंने पढ़ाई की, उसमें मुझे एक जो टर्म था, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। व्हाई? बिकॉज इट टॉट दैट हाउ यू कैन ब्रिंग द पीपल align your people with the same vision, mission and objective of your company, right? And that was something very was a turning moment in my life, because मैं team build, I'm very good in convincing people. I can build, I knew that मैं people I can bring the team, but मैं उनको बांध के कैसे रखूं। So मैं हमेशा अपने लोगों को आके बोलती थी, सुनो जाके MBO पढ़ो, मैनेजमेंट किया है ना किया है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, सारे अपने मैनेजर्स को बिठाया मैंने कहा वो पढ़ो, आपको पता चलेगा। और वो जो पढ़ के आते थे, मैम किताब से तो कुछ पता नहीं चल रहा है ज्यादा अच्छा। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ अपने टीम को इतना इंगेज रखो एम्पैथी के साथ, बिकॉज दैट स्किल एंड लीडरशिप इज नॉट कि आप फाउंडर होके ही लीडरशिप दिखाओगे, आप गुड मैनेजर होके भी आपके अंदर अच्छा लीडरशिप होना चाहिए, आप टीम लीड होके भी अच्छा लीडर होना चाहिए। और आप कुछ नहीं हो, अभी सिंपल एक डेस्क पे एम्प्लॉय हो तो भी आपके लीडरशिप स्किल्स अच्छा होना चाहिए, बिकॉज दैट विल टेक यू टू हायर स्टडी, हायर। सो वो चीज हम वो बिल्ड करना बहुत जरूरी है, मिशन विजन और अपने ऑब्जेक्टिव से अलाइन करना बहुत जरूरी है। द थर्ड केस स्टडी इज फॉर लीडरशिप, जिसकी हम बार बार बात करते हैं। माय फेवरेट इज रतन टाटा, एंड वी ऑल नो। Dr. Shweta, Yes. I think let the participants put forward their own view on this case that you have given for Ratan Tata. Let them highlight the reasons for success of this Tata Group. Can I request the participants? Let's see how much they have understood till now regarding what we have been discussing. So can I request just to show that Tata Group content so that they are able to relate and come out with the reasons for the success of this Tata Group. It's a traditional group of the country. So long it has been providing so many products and services to the citizens of the country. So if you can just highlight few points that made this group a success. I request the participants, if you have got any idea regarding what was the set of critical success factors, क्या कारण थे जिसकी वजह से ये ग्रुप सक्सेसफुल रहा। अगर आपने डॉक्टर श्वेता को बहुत ध्यान से सुना होगा तो आप मेरे ख्याल से पॉइंट आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले भी इसके बारे में बोल चुकी हैं। Yes. If you talk about behavior, attitude,
उन्होंने पहले भी जब अपना एक्सपोजिशन दिया था तब भी उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ये टाटा ग्रुप क्यों सक्सेसफुल है। एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर जिसके कारण से हम इनके प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं, इनके सर्विसेज को हम अडॉप्ट करते हैं, वॉट एवर सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय देम। Okay, so Ashish has mentioned this as reputation and people focus. I now hand over it to Dr. Shweta. आप please whatever responses are coming उसके basis पे आप अपना now build up कर सकते हैं like session. Yes, so I'll say आशीष ने लिखा है reputation and people focus. People focus. Reputation is built, not built in one day, Ashish. So reputation is like कि आप continuously कैसे perform कर रहे हो. That is how you build the reputation. So people focus, yes. People focus. Any company which is people focus and team member focus is always. So yes, honest with their employee. Yes, that is what empathy should be there. Serving to societies, every entrepreneur serves to society because it's the mandate also. CSR का एक mandate है कि आप अपनी profit का 2% दो, तो yes, but the way you are serving to the society, and Ratan Tata does his philanthropy. If you see the philanthropy activity of Ratan Tata is fantastic. Honest, trust, yes, as a person. Vision is very important. Saket has mentioned it. Vision, I'll say it is one of the best characteristic which he has given, because what you vision and how you align your vision is very important. Solution for society, that is pull generated by society centric approach. I didn't understand, so Abhinand, I will take this later. Social cause, yes. Innovation, consistency, CSR initiative, yes. I think Abhinandan is trying to again elaborate on what Saket has mentioned. So Saket is saying pull generated by society-centric approach. So it's the same thing that you deliver products and services that are for the benefit of the society. Yeah. Okay. That's what Nagraj also has mentioned, social Yes. cause being taken into account. And Akshat is mentioning innovation, consistency, CSR initiatives. Yes. See, innovation, I'll give you one very good example. Why a startup fails. Innovation is very important part. And not only Ratan Tata, but innovation is part of all the Reliance, you say, innovating daily, something new. Innovation, because of innovation, the most trusted company failed. And if you can name that company, एक company ऐसा था जिसको हम मतलब उसके product नहीं बोलते थे, उसका ही नाम बोलते थे. Can you name a company which failed drastically? A very big company, just because of innovation. Responses IAN, Nokia, Kodak. Yes. So Nokia is one of the biggest example of failing due to innovation. अगर आपने देखा होगा video, CEO cried and said that just because lack of innovation. But you know, Nokia was saved because of what? Why Nokia was bankrupt होने के बाद भी खरीदा उसको माइक्रोसॉफ्ट ने, और क्या खरीदा? एक रिस्पॉन्स आया है चेतक स्कूटर failed, right? Gaurav has mentioned. Kotak, yes, these company failed. Kotak also. Okay. Adaptation, Android, no. Adaptation. Yes. Has large customer base, I guess, no. Customer base पूरा Apple और Samsung पे shift हो गया. Yes, Gaurav Verma. It's not patient, it's patents. Patent. Patents. So Nokia was saved because of huge IP portfolio. Complete patents were bought by different companies. So now this is very important, that one thing which as a startup you should focus कि आप अपने कितने IPs बना सकते हो अपने business में. And अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ और सिर्फ उनके patent portfolio, IP portfolio, not only patent but IP portfolio की वजह से ही वो उनको पैसा मिला, उनको Lumia ने, Microsoft ने खरीदा. No, they will not sell the patent, they will license the patent. So IP portfolio की वजह से ही Microsoft purchased complete Nokia. So let's move to next. Our target is Bharti. They will ask question. Yeah. We need to move ahead. Sure. Any questions that you have? I now request the participants. Now the forum is open for your queries. I request you to please put forward any kind of
exposition, elaboration that you want. अगर आपको कोई भी तथ्य को समझना है या आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल से रिलेटेड, एप्टीट्यूड से रिलेटेड, डॉक्टर श्वेता ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल्स कि क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं सक्सेस के. तो अगर आपको कुछ डाउट क्लियर करना है आप प्लीज. I think Bharti, I just missed one point was failed startup, right? Learning from the startup and failed startups, yeah. Yes. So till the time you people come up with questions, I'll give you few of the example of failed startup from India only, right? So if we see the example, we were having a local बनिया करके एक ऐप आया था और इसमें 3-4 लोग, 3 थे, 1 फीमेल 2 मेल, एंड लोकल बनिया ने जितने मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कास्ट बट हियर द बनिया मींस दैट किराना शॉप कहते हैं ना, बनिया की दुकान पे चलो करते, तो जितने लोकल किराना के शॉप थे उनको एक प्लेटफॉर्म पे एग्रीगेट किया. द कॉन्सेप्ट वाज रियली गुड. Why? Because एक बनिया की शॉप आज की टेक्नोलॉजी के टाइम पे बहुत लोगों को रीच नहीं कर सकती थी और बट इस ऐप के थ्रू दे डिड अ गुड जॉब. जब 2014 में आए 16 तक बंद हो गए, बट जितने टाइम कर रहे हैं इनका कॉन्सेप्ट अच्छा था, प्रॉब्लम अच्छा था, टेक्नोलॉजी भी अच्छी थी, बट देयर इज अ वर्ड कॉल्ड मार्केटिंग मायोपिया, राइट? एंड it just because of this one reason, cash flow, burning cash flow was the another reason कि बहुत ज्यादा फंड रेज किया और बहुत पैसा लगाया, बट और पैसा गलत डायरेक्शन में लगाया. लेकिन मार्केटिंग मायोपिया एक टर्म है जिसकी वजह से ये फेल हुए. मार्केटिंग मायोपिया क्या है कि मैंने जो बनाया वही सबसे अच्छा है. दैट इज वन रीजन. मैंने जो बनाया मुझे उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो बनाया वो बेस्ट है एंड आई डोंट नीड मार्केट टेस्टिंग, राइट? सो दिस इज वन थिंग. सेकेंड, अगर आपको याद हो तो एक स्टार्टअप और आया था टाइनी आउल करके, टाइनी आउल, देन पेपर टैप, अगर आपको याद हो तो. ये सारे स्टार्टअप्स जो आए और गए, इनका रीजन था, एक वर्ड है कॉल्ड PMF, प्रोडक्ट मार्केट फिट. हम प्रोडक्ट तो बना लेते हैं, हम प्रॉब्लम बहुत अच्छा आइडेंटिफाई करते हैं, हम प्रोडक्ट भी बना लेते हैं. कभी कभी मार्केट मायोपिया के कारण हम वो हो जाते हैं, हार जाते हैं. कभी कभी हमारा प्रोडक्ट मार्केट में फिट नहीं होता है और हम उस तरीके से इनोवेट नहीं कर पा. हम इनोवेशन पे बहुत खर्चा कर देते हैं, बट क्या वो प्रोडक्ट जनरल पब्लिक को पसंद आएगा, क्या कंज्यूमर फ्रेंडली है वो प्रोडक्ट? So there are very, अगर आप देखोगे, very small things, but because of which the company fails, right? Because of which the company fails, that cash burn, founder co-founder में, founder and co-founder जो लड़ाइयाँ होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. और अगर आप देखोगे फेल स्टार्टअप का लंबा लाइन है. टैक्सी फॉर श्योर आप में से किसी ने लिखा है, स्टेजिला है, बनिया मैंने आपको बता ही दिया, यमिस्ट करके आया था. कुछ लोग कहते हैं बहुत सारे स्टार्टअप इसलिए नहीं चले क्योंकि उनकी जगह ग्रोफर और ये सारों ने ले, मेक माई ट्रिप ने बहुत लोगों को नहीं उठने दिया. नहीं, आखिर पेटीएम भी आया, ओला भी आया, उबर भी था उस वक्त इंडिया में, उबर भी आया, बट फिर भी ओला अच्छा किया. व्हाई? बिकॉज किस तरह से इनोवेशन इज अ कंप्लीट, इनोवेशन इज नॉट ओनली द प्रोडक्ट, इनोवेशन इज ऑल्सो इन द प्रोसेस, राइट? आपका एयरटेल चल रहा था, वोडाफोन चल रहा था, फिर भी जियो आया और जियो कैप्चर्ड द मार्केट, but just because of the process innovation, right? So there hike messenger आया, नहीं चला. Then there was Dormint, BabyBerry, there are ZepPay, so many startups which came, Dazo, so many startups which came and just vanished, and all because of people say that, मतलब मैं इसको मिथ मानती हूँ, lack of funds. lack of fund, अगर आपका कंपनी अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छा है, आपको फंड्स मिलना is not a problem these days, and since 2014 I would say is not a problem. Poor financial planning is a problem. Highly anticipated models which doesn't synchronize with the nature and lifestyle of the target audience is a problem. Then the problem is your poor customer services. जो मैंने आपको इतना अच्छा example दिया, Zef का supply chain management, and then taking the product to the customer was, and then lack of legal focus आपका. और एक बहुत important point इसमें है, बहुत बार जो है legal dispute आ जाता है, और legal dispute major cause होता है cash burn और company बंद होने का. Acha, now that's a beautiful way that you have explained the reasons for failure of various startups, Dr. Shweta. Now, I would like to ask you a question.
Now I am going to take few questions that have been put up by the participants. One question has been put forward by SL Kapil. He's asking as to how to begin a company. So how to begin a company? If you have an idea, you register your firm as a private limited, as a sole proprietor, because if you are going to have, if you are seeing that future funding, then I always say that go with a private limited. Identify the team, आइडेंटिफाई हाउ यू विल बूटस्ट्रैप मतलब आप पहले कैसे पैसा जमा करोगे, अपनी सेविंग्स लगाओगे, फ्रेंड्स से मांगोगे, फैमिली से मांगोगे, कैसे करोगे, तो वो बूटस्ट्रैप आपके पास एक सेविंग इतना होना चाहिए और उसकी प्लानिंग होनी चाहिए कि सेविंग आप कितने दिन में खत्म करोगे, उतने दिन में आपका प्रोडक्ट कैसा बना रहे हो, मार्केट से ट्रैक्शन कितना मिल रहा है, और उसके बाद फिर आप कितने लोगों के पास जाके पैसा मांग रहे हो एंजल इन्वेस्टमेंट. अक्षत का भी सिमिलर क्वेश्चन है, हाउ टू गेट सम इनसाइट्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडिंग. So see, this funding, I would request Bharti, we can have a next session because it's again one and a half kind of session. Yeah, but I know. Insights or different kind of funding you can have. You can have. आप Google पे जाओ, you will know what kind of all funding. आपके bootstrap, मैं simple में बता देती हूँ. bootstrap होता है, फिर angel investments होता है. angel investment के भी 2-3 राउंड हो सकते हैं. फिर आपके VC फंडिंग होता है जो आपका सीरीज A से शुरू होके N नंबर तक जाता है. Manish, we would share details with you. You can write a mail to the iic@imtcdl.ac.in for more details. Then we have another question that has been put forward by Abhyanand. So Abhyanand wants to know, Shweta, what made you more oriented towards entrepreneurship journey? Okay. So mine is a bit funny. I come from a very small town, जौनपुर. तो कई लोगों को पता भी नहीं होता, मुझे बताना पड़ता था बनारस के पास है. अब मैं नहीं बताती because आपकी ज्योग्राफी खराब है, मेरा शहर तो वहीं पे है, and it's a historic place. So and I belong to a Rajput community where girls are not allowed to study. A very conventional and orthodox family. We are 3 sisters. So जब 4-5 साल की थी and when my mom decided कि हमें पढ़ाया जाएगा अच्छा कॉन्वेंट एजुकेशन में, and they will not focus on our marriage or where to get married their daughter, but they will focus that we should be earning, we should हम अपने पैर पे खड़े रहें. So हमारे सारे कजन ब्रदर्स जो है जब हम मिलते थे तो हमें चिढ़ाते थे. So from there this entrepreneurial mindset oriented कि एक दिन मैं इन लोगों को अपनी कंपनी में नौकरी दूंगी. And from that day, since that day I thought Nice. I will start something. And I was blessed. I got married at the age of 20 with a right person who actually supported in my dream. So from the age of 5 or 6, this was something that I'll not become doctor or pilot or this or that. I'll start something on my own. Another similar question which Abhayanand has put forward is how do you counter your day-to-day competition and infiltration in startup? How to counter your day-to-day competition? See, keeping eye on competitor is very important. And innovation is the best solution for that. See, pricing can never be a solution. कि कोई आपने कोई प्रोडक्ट सपोज 1000 रुपए में बेच रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर 800 में बेचने लगा, फिर आप उसको 700 कर दो. No, you can do 700, but why you are doing? Are you making profit out of it? Are you? So innovation is the best solution. Keep eye. We say it like we do in IP. We keep IP watch. Keep competitor watch. They are innovating, and keep focusing on your product. How best you are going to transform your product that suits the market. That is the best way. There is another question which has been put forward. To have a startup for perishable goods like vegetable and fish, so what factors should be taken into account? To a startup for and who asked this question? Perishable product, that's put forward by Kshetriya Mayum. Right, Kshetriya Mayum has put forward this question. And again, Rishabh has asked how to know whether I have required skills for a startup or not before I take the risk. Similar question by Prakash. What are the situations we have to think before starting any startup? And
See, skills, no one is born with the skills. There are very few people who are born with this skill. I was not having any skill, I would say. And I have seen many of my friends, many of the startups and entrepreneurs who we are not born with the skills. It develops with the time, right? So you need to do the SWOT analysis. और ये MBA में बहुत अच्छे से आपके faculties सिखाते हैं how to do a SWOT analysis. So किसी company का ना करके सबसे पहले you do the SWOT analysis of yourself. Right? I am good at convincing, and since childhood I knew that I can convince people. So do the SWOT analysis of yourself, and whatever is your weak area, never disclose, but work on that. And this is the best way you can learn. Be with people who are progressive thinker. Go attend their workshops, go meet people. आप जितना मिलते हो ना, नेटवर्क करते हो, जितना मिलते हो people का, सबके मैं सबकी अच्छी अच्छी चीजें ग्रैब करती हूँ और फिर सोचती हूँ मैं वो नहीं बन सकती, बट मैं खुद को चेंज कर सकती हूँ उन अच्छे अच्छे क्वालिटीज से. सो आपको टाइम के साथ, एक दिन में नहीं आएगा. जिसने भी पूछा था मैं नाम भूल गई, एक दिन में ये क्वालिटीज नहीं आएंगी, बट विथ टाइम यू विल लर्न. और उसके लिए वेट नहीं करना. आई डोंट वेट. रिस्क लो, बट उसको कैलकुलेट करके लो, और धीरे धीरे आपके अंदर सारे स्किल्स खुद डेवलप हो जाएंगे. Chandni has a similar question: how to know your suitable market? And Munish has mentioned, can we start a startup without quitting the current job? If your job allows. My job didn't allow, my employer didn't allow me to do earn with the job. And see, to Munish, anything half-hearted cannot be won. That war cannot be won. मैंने 2010 से अपना एक बेस बनाना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता था 13, 14, 15 मैं थोड़ा और लेट शुरू करना चाहती थी, बट सर्कमस्टेंसेस वर आई हैड टू स्टार्ट इन 2013. बट 2020 से मैं 10 से मैंने फ्रीलांसिंग थोड़ा थोड़ा शुरू किया विद ड्यू परमिशन ऑफ माय कंपनी. मैंने फ्रीलांसिंग शुरू किया टू टेस्ट माई सेल्फ, बट टेस्टिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगाया जाता है. एंड डुअल, दो नाव पे पैर रख के आप नहीं कर सकते. या तो आप अपने जॉब को दीजिए, या तो आप अपने स्टार्टअप को दीजिए. और स्टार्टअप कभी भी आपका फुल टाइम चाहता ही चाहता है आपका, बिकॉज दिस काइंड ऑफ अ बेबी. जैसे आप बच्चा पैदा होता है और उसको फुल टाइम चाहिए ही चाहिए माँ का ना, सेम लाइक दैट. And how to know suitable market? Chandni, first, what is your product? And then you can only, so I can answer this question when I know what problem you are going to solve. Similarly, Prakash also has a similar question: what are the challenges faced in a small city for a startup? And Manpreet has a question: how to get loan by MSMEs? There are various schemes given by there are various schemes, and you can go on MSME and you can get. Startup India का अपना स्कीम है, MSME के अपनी स्कीम्स है, और MSME के कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, बट वो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज को नहीं देते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज को देते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वालों को देते हैं. सो आप MSME की साइट को एक्सप्लोर करो, स्टार्टअप इंडिया की साइट को एक्सप्लोर करो, you will get to know. Then what are the challenges we faced if we are startup in small city? मैं कहती हूँ startup in small city को challenge नहीं है. challenge सिर्फ हो सकता था फंडिंग का. आज के टाइम में एंजल इन्वेस्टर्स और वीसी टीयर 2 टीयर 3 के सिटीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं. सो आप चैलेंजेस खुद आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं. उसके बेसिस पे कोई भी मेंटर और एडवाइजर आपको कर सकता है. एक्सपोजर की प्रॉब्लम थी पहले, लेकिन अब वो भी नहीं है, बिकॉज गूगल इज एवरीवेयर, इंटरनेट इज एवरीवेयर. Vivrat has mentioned anyone can start their startup from remote locations. Definitely, yes. Vivrat. Yeah. Yes. Chandni again has mentioned. Okay, so you need to, if your product is textile and manufacturing chemicals, then you need to identify who are the customer you are going to provide. Right now, this question you should be answering to me, that who will be your target market for this, because textile and manufacturing chemical, which chemicals you are manufacturing, what kind of, if it is pharmaceutical, skincare, then the question comes, is the skincare suitable only for the women? Is the skincare for the both genders? Then what kind of a skin you are targeting, dry, oily? And also these questions you need to form. Chandni, you can ask me separately someday. I'll be happy to help you. Just to share with the participants here that Dr. Shweta is also running a She Real kind of a platform. So this is a Web 3.0 platform, which is for the women from diverse background. You can share, create, and grow together. So you can always find details of this. Chandni, if you want to connect with Dr. Shweta, you can connect with her.
And I think that completes the set of queries. If there is any other doubt, any clarification which any other participant wants right now, you can post your question on the chat mode. Otherwise, I believe, One question I yeah. like to say here, Manas Mahapatra is a startup is always implementing things which is new thing in market. So see if it is inventive thing, yes, maybe, but बहुत सारे startups हैं नहीं, they have existing solution को ही उन्होंने upgrade भी किया है. Ola hasn't solved any new problem. Uber has already solved that problem, right? So they have only solved the problem which were Uber, they identified. Airbnb was there, then Oyo came. So existing problems पे भी existing market जो already चल रहे हैं businesses, उनके problems को भी आप solve कर सकते हैं और नए तरीके से solve कर सकते हैं, efficient way में solve कर सकते हैं, maybe ये customer आपसे ज़्यादा खुश हो. Okay. I hope that takes care of all the queries. Anyone else whose query has not been addressed, you can again post the query over the chat mode. Okay, Shashi has mentioned, I have started my own company, travel company. Could you please help me out to how to boost my business? Definitely, Sashi. I'll connect you to my all travel based startup friends. You can search Rashmi. She is founder of Voyage. She's very active on Insta and all. You can connect to her, and there are many women actually who are into travel and tourism industry. So definitely, I'll help you. But to help you to boost your business, this time limit will be less, but yes, I'll be happy to help you. I request Shashi to send your query at this so that we'll connect with Dr. Shweta. It's ise@imtctl.ac.in. So anyone else who has any query, wants any support, any doubt that you have, any idea that you want to just test and just share with the cell, you can always put forward to this mail ID and we'll connect you with the expert so that you get a clarity on your doubt. And I think with this, yeah, Gaurav is asking. He is he is running a startup, but due to team skills trust, not able to generate revenue. So I would say adapt, practice what lead by example. So start generating revenue yourself. Teach your team how to generate revenue. Build the empathic nature culture. I'm sure you will generate the revenue. I think you got the tip from our expert, Gaurav. Okay, so that's done with Gaurav as well. And I think that was a very beautiful session, very lucid explanation with examples that has been given by Dr. Shweta and the various points that she has been emphasizing upon, what skills that you should have. So you should be an individual who's enterprising in nature. You should have technical knowledge, not technical expertise, but technical knowledge is required. You should be a risk taker, and risk taking should be calculated in nature. So just don't jump in the sea. Please take a calculated risk whenever you want to go ahead with your venture. And another point that which she has very clearly mentioned is never give up. So whenever you start your venture, so you should be persistent and try to run your venture. She talks about peon and proprietor of the organization. So when you are setting up your venture, you should be very clear that you should be very humble. You should be empathetic in nature. So you should be ready to undertake any kind of task that is required by the venture. So empathy is very important. If you talk about behavioral skills or attitude, that should be there. So persistent and empathetic in nature, and you should be able to manage your time. So time management is equally important. And to scale up your business, to grow your business, you should create your net worth through networking. A very important success factor that has been specified by Dr. Shweta. So create your net worth through networking. And with this, we conclude with the session. I hope all of you would have got an insight into how to start your venture. आप कैसे ideate कर सकते हैं? अगर आपको venture शुरू करना है तो आपको कौन से critical factors को ध्यान में रखना है?
how you can build your team. आप अपनी टीम को कैसे build करें, उनको कैसे coordinated रखें, कैसे आप अपना vision set करें, कैसे आप अपना मार्केट में जो लॉन्च करना है प्रोडक्ट उसको टेस्ट करना है कि नहीं करना है, किस स्टेज पे करना है. सो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन वेरी excellently explained by Dr. Shweta. And now to end with the session, I would quote Henry Ford. So what Henry Ford had mentioned, if I had asked the public what they wanted, they would have said a faster horse. So that clarifies. So what product to supply, to manufacture, that you need to identify. And rest would build up. If you are persistent, you never give up, and you build your net worth. And with this, we believe that you would be connecting with us on this mail ID that I have shared with you, iic@imtcdl.ac.in. If you are in a doubt, if you have certain idea, you can always share your idea. I'll connect you with Dr. Shweta or any other expert as per your venture in which you would be aiming to start. And with this, again, thank you, our esteemed expert, for devoting this precious time and taking this session with IMT-CDL. So thank you, Dr. Shweta. Okay, we'll be connecting. Yeah, sure. Thank you so much. Thanks. And bye to all of you. So keep ideating, keep venturing out and building your network to come out with new ideas, new ventures, and contribute to the growth of the society at large. Yes. Bye bye, and thanks to all of you for being a very interesting, coming out with interesting questions and participating in this session. Thank you. Thank you.